everyone, welcome back to my channel. So let's begin from where we have stopped in part 1. So basically I just want to tell you that for full utilization of any resource you need appropriate technology, development, need institutions, and you need the human knowledge or the human resource. Okay, so three things you need: appropriate knowledge, technology, then institutions, and human resource, which is knowledge. When you will have these three things, then only resources will contribute to development. Then under the topic conservation of resources, it is told to us that it is very important for conservation of resources, and you can conserve resources by the 3 R's: reduce, reuse, recycle. Okay. Then it is told about the Gandhian philosophy, where Gandhi ji said this famous thing that there's enough for everybody's need but not for everybody's greed. Okay, and also he was against mass production and he wanted to replace it by the production by masses. Then over here it is given about a very important thing of the Gandhian philosophy. So at the international level, what happened was so in 1968, the Club of Rome advocated the resource conservation in a very systematic way. In 1974, Gandhian philosophy was again presented by Saku Makar in his book Smaller is Beautiful. Okay, and it is given about that the seminal contribution with respect to resources conservation and global level was made by the Brundtland Commission report of 1987, and this report introduced the concept of sustainable development. Okay, also it means that resource conservation should be there, and it was entitled in the book Our Common Future. And there was one more contribution which was made at the Earth Summit at Rio de Janeiro, Brazil in 1990. Okay, so this is only about the different people who wrote such books and about the conservation. Now let's begin with land resources. So why is land a natural resource? So we live on land, we perform economic activities on land, and we use it in different ways. Thus land is a natural resource, and it is a very important natural resource. It supports natural vegetation, wildlife, human life, economic activities, transport, communication, and whatnot. Basically, land is an asset of finite magnitude. Okay? Because land has lots of uses. Okay? So it is very, very important for us to conserve the land, and we should do proper planning. So let's see about the relief features of the land. So land has basically three relief features: the plain surface, the mountains, the plateaus. The plain surface is 43%, the mountains are 30%, the plateau region is 27%. The plain surfaces provides facilities for agriculture and industry. The mountains are tourism, and the plateaus are rich in minerals. Again, let's summarize. India has three things: plain surface, mountains, plateaus. Plain surface 43%, mountains 30%, plateaus 27%. Plain provides agricultural facilities, mountains provide tourism facilities, plateaus has minerals. Now let's move to the most important topic: land utilization. So we'll see how is the land utilized in forests. So forest is considered an essential for maintenance of the ecological balance, and land
which is not available for cultivation, which is the barren or the wasteland, and the land which is put to non-agricultural uses such as buildings, roads, factories. So which land is not available for cultivation? The barren or wasteland, or that land which is in non-agricultural uses. Then other uncultivated land which has the permanent pastures where the grazing activities are done. The land which has miscellaneous tree crops, ठीक है, दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेट सोन एरिया. मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स आप देखते हो ना, ऐसा खुद से उग जाते हैं जंगल, ठीक है, सो दैट लैंड. एंड द culturable wasteland, land which is left uncultivated for more than 5 years. This is very important, ठीक है. So one is your grazing wala land, then the miscellaneous tree crops, and the culturable wasteland in the other uncultivated land. Then the fallow lands. Okay, so fallow lands, the lands which you are currently not using. So the current fallow, one is the current fallow, okay, when you are not using the land for 1 or less than 1 year, or the other than current fallow which is from 1 to 5 years. Now you will say that this other than current fallow and culturable wasteland is the same. No, other than current fallow is from 1 to 5 years, whereas culturable wasteland is more than 5 years. Understand the difference, okay? Then net zone area. What is net zone area? The total area, okay. And the gross cropped area. What is this gross cropped area? Gross crop area is net zone area plus seasonal crop. See what happens, this year farmer wants to grow wheat. So farmer has grown wheat. Now instead of 12 months, farmer required only 11 months. So in the left over 1 month, farmer had grown your sugarcane. Okay. So his net zone area was wheat, and seasonal crop which he had grown because he had time was your sugarcane. So this whole is the gross cropped area. Again, one, forest, land which is not available for cultivation, the barren and the wasteland, and the non-agricultural uses such as buildings, roads, and other things. Then other than cultivated land, so grazing wala, then miscellaneous tree crops, culturable wasteland. Fallow land में current fallow, other than current fallow, and net zone area. Then the land use patterns of India. So the use of land is determined by physical factors and by human factors. So what are those physical factors? Such as topography, climate, soil type. Human factors such as population, density, technological capability, traditions, culture, etc. Now, the total geographical area of India is 3.28 million square kilometer, but only 93% of the total geographical area, means only 93% of 3.28 million square kilometer is used. Okay, is the land use. Why? Because in the states of northeast states and Assam, except Assam, okay, northeastern states and Jammu Kashmir, they are occupied by Pakistan and China, so therefore they are not being surveyed. Which things? Northeast states, Jammu and Kashmir, and in northeast states you don't include Assam. Okay, so let's see this classification. This classification is of only 93% of 3.28 million square kilometer. So this is your forest land. This is the barren unculturable wasteland. Green one is the area of a non-agricultural uses like making factories, industries, and so on. This is of your non-culturable uses. This is this is non-culturable uses. This is those tree crops, the your जो भी झाड़ ऐसे उग जाते हैं ना, so those tree crops. Then this is for the permanent pastures. This and means so on it is. The land under the permanent pastures have also decreased,
and most of the other than current fallow land is either of the poor quality, and because it is of so much poor quality that the cost of cultivation in such land is very high, and therefore it is left fallow now also. Then the pattern of the net sown area varies. For example, it is over 80% in Punjab and Haryana, but it is less than 10% in Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, and so on. Now, in 1952, the National Forest Policy said that there should be at least 33% of forest area in our country. But in our country, there is only 18% of forest area. We have seen in that chart. Okay. Why it should be this much? Because it is considered essential for the maintenance of ecological balance and the livelihoods of millions of people who depend upon forests. Now let's see what are the wastelands. So those lands which are rocky, arid, and they are in the desert area, they are put to non-agricultural uses, and which this includes settlements, roads, railways, industries. Now let's see how land degradation is done. So by the continuous use of land over a long period of time without taking appropriate measures to conserve and to manage it, land degradation, it has resulted in land degradation. Okay, now let's see the land degradation and the conservation measures. First we will see the land degradations through how many types it happens. So I'll tell you 5 types. Let's begin. So the causes. What are the causes? The causes are deforestation, human overgrazing, mining, quarrying. Okay, now let's begin. First, let's begin with mining. So mining sites are abandoned after excavation work, and what happens basically कि in states such as Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Odisha, what happens is कि जब mining होती है बहुत सारे minerals in states में, तो जब mining होती है, mining ख़त्म हो जाती है ना, तो उसको ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं. इससे क्या होता है कि वो deep scars रह जाते हैं उसके अंदर, और वो जो land होता है ना बहुत बुरा हो जाता है. तो ये थी हमारी माइनिंग. सो माइनिंग करो पर अच्छे से करो माइनिंग, ठीक है. देन इट इज़ ओवर ग्रेजिंग, ठीक है. तो जैसे स्टेट्स है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पे ओवर ग्रेजिंग बहुत होती है, जिससे क्या होता है कि लैंड जो है वो डिग्रेड हो जाता है, ठीक है. फिर वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम. तो भाई वाटर लॉगिंग कहाँ होती है? पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, ठीक है. और वाटर लॉगिंग होती किस वजह से है? इरिगेशन की वजह से होती है ना वाटर लॉगिंग, तो ठीक है, जिससे लैंड जो है वो डिग्रेड हो जाता है, वाटर लॉग हो जाता है. और वाटर में क्या होती है? सैलिनिटी नमक, और एल्कलिनिटी यानी कि वही नमकीन हो जाता है पानी, जिससे जो अच्छा नहीं है ना सॉइल के लिए, ठीक है. तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा माइनिंग, ओवरग्रेजिंग, वाटर लॉगिंग. माइनिंग कहाँ होती है? जो स्टेट्स जहाँ पे माइनिंग होती है वहाँ पे माइनिंग की प्रॉब्लम होगी, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़ लिख देना. फिर आपका ओवर ग्रेजिंग के लिए आप लिख दो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, ठीक है. और वाटर लॉगिंग के लिए जो अच्छे स्टेट्स हैं इरिगेशन वगैरह जहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, वो जैसे पंजाब, हरियाणा के लिए आप वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम लिख के आओ. फिर हम देखेंगे एक और नई प्रॉब्लम जो कि है सीमेंट ग्राइंडिंग, मिनरल प्रोसेस, ठीक है. तो जैसे कि सीमेंट ग्राइंडिंग होती है, जैसे लाइमस्टोन की ग्राइंडिंग होती है सीमेंट इंडस्ट्री में, कैल्साइट की, सोपस्टोन की, इन सारी चीज़ों की क्या होती है? ग्राइंडिंग होती है. तो ना इससे क्या होता है? एटमॉस्फेयर में बहुत सारा डस्ट प्रोड्यूस हो जाता है, और ये वाटर में भी जाता है, जिससे वाटर में इन्फिल्ट्रेशन होता है, और सॉइल में भी जाता है. फिर ये लैंड पे सेटल डाउन हो जाता है, और साल लग जाते हैं इसको निकालने के लिए, और ये एफ्लुएंट्स रहते हैं, ठीक है. तो ये बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है. अब हम देखेंगे इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स के बारे में. जी हाँ, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स. तो ये क्या चीज़ है भाई? इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स. सो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स आर द वेस्ट, ठीक है. वेस्ट है ये जो बहुत ज़्यादा लैंड और वाटर का पोल्यूशन करते हैं बहुत सारे पार्ट्स में कंट्री के. तो कुल मिला के हमने 5 चीज़ें देखी. एक था माइनिंग, फिर ओवरग्रेजिंग, वाटर लॉगिंग, सीमेंट ग्राइंडिंग, और industrial your affiliation. So let's see the conservation technique.
ओके, सो कंजर्वेशन के लिए भी मैं आपको 6 तरीके बताऊंगी बड़े आसान से। एक तो हम ले लेते हैं अफॉरेस्टेशन, वही डिफॉरेस्टेशन का ऑपोजिट। उसके बाद हमने क्या देखा था, ग्रेजिंग है प्रॉब्लम, तो लिख दो देयर शुड बी प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग। उसके बाद क्या हो रहा था, क्या हो रहा था, वेस्टलैंड्स वगैरह थे, तो लिख दो कि प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड्स, ठीक है। फिर क्या होना चाहिए, शेल्टर बेल्ट्स बनाने चाहिए जिससे ओवर ग्लेजिंग हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स, है ना, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, सैंड ड्यून्स जो है वो उड़ते हैं, उड़ते रहते हैं, ठीक है। तो अगर हम थॉर्नी बुशेस लगा देंगे तो सैंड ड्यून्स जो है उड़ेंगे नहीं और लैंड जो है डिग्रेड नहीं होगा, ठीक है। फिर क्या करना चाहिए, माइनिंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर लो। फिर क्या करना चाहिए, हाँ, फिर इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस का एक प्रॉपर डिस्चार्ज और डिस्पोजल होना चाहिए, ठीक है। तो जो चीज़ें हमने पढ़ी थी कंजर्वेशन में वही चीज़ें आप डिग्रेडेशन में वही हम लिख देते, वापस कर लेते एक बार। फॉरेस्टेशन लिख लो, मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लिखो, शेल्टर बेल्ट्स प्लांट करो, सैंड ड्यून्स के बारे में लिख दो, फिर वेस्टलैंड्स का अच्छे से मैनेजमेंट करो और लैंड डिग्रेडेशन पे भी चेक रखो, माइनिंग एक्टिविटीज़ पे कंट्रोल रखो, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स का अच्छे से डिस्चार्ज करो। तो ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपना सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। बाय बाय।